हाय एवरीवन, दिस इज सिमरन। आज की हम वीडियो में बहुत ही बेसिक नॉलेज शेयर करेंगे कि लोग ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं पर उनको बहुत बेसिक जो चीज़ें हैं एनएससी, बीएससी, निफ्टी, सेंसेक्स, दीज टर्म्स दे आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट इज निफ्टी 50, हाउ इज सेंसेक्स मेड, हाउ इज निफ्टी 50 मेड। सो इस वीडियो में हम वो बेसिक इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे बिकॉज दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ बेस ऑफ द स्टॉक मार्केट। सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन विथ यू। एक बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन है। स्टॉक एक्सचेंजेस आर बेसिकली टू टाइप्स, लाइक यू कैन सी हियर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड national stock exchange, right? It's not nifty, it's national stock exchange, sorry. So here the Bombay Stock Exchange, one of the oldest stock exchanges in Asia, and it was established in 1875. You can calculate number of years old it is. 1875 में established हुआ था, one of the oldest, and the companies listed in BSC is 5,000 plus companies are listed. And the index of Bombay Stock Exchange, index is basically index क्या है, एक प्राइस है, एक रिलेटिव प्राइस है। बीएससी का अगर इंडेक्स हम कह रहे हैं सेंसेक्स है, इट्स अ रिलेटिव प्राइस विच इज शोइंग द टॉप 30 कंपनीज लिस्टेड इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। उनका एक रिलेटिव प्राइस कैलकुलेट होता है। कहते हैं सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, सेंसेक्स नीचे जा रहा है। उस सेंसेक्स के ऊपर जाने का मतलब जो टॉप 30 कंपनीज लिस्टेड है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, दे आर परफॉर्मिंग वेल, राइट, दे आर गोइंग अप। एंड सेंसेक्स के गिरने का मतलब है दैट दोज शेयर्स ऑफ 30 कंपनीज, जरूर नहीं सारे 30 कंपनीज का शेयर फॉल करे, रिलेटिवली द प्राइसेस ऑफ द कंपनीज इज फॉलिंग। 30 में से मे बी 20 कंपनीज के शेयर्स फॉल कर रहे हैं, सो सेंसेक्स इज फॉलिंग। सो बीएससी का एक मेजर इंडेक्स है सेंसेक्स, एंड इट इज made of 30 companies, of top 30 companies which are high performing companies and listed on Bombay Stock Exchange, right? So Sensex is basically a relative price. And NSE, National Stock Exchange है, it is largest stock exchange in Asia. बहुत बड़ा stock exchange है, and around 1900 प्लस कंपनीज इसमें लिस्टेड है। एंड इसका इंडेक्स है विच इज निफ्टी। निफ्टी इज नथिंग बट एन एब्रीवेटेड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म कहते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और 50 से बना एब्रीवेटेड फॉर्म है विच इज निफ्टी। निफ्टी 50 मीन्स इट इज बेसिकली showing us the performance of top 50 companies which are listed in national stock exchange. So Nifty 50 में जो basically trade करता है, it's an index, उसमें जो trade कर रहे हैं, they are basically trading in largest 50 companies which are your top performing 50 companies which are listed in national stock exchange. So if uh, I show you here, this is this is the screen which is shared with you, and this is basically what information I've tried to give you. It is basically the stock exchanges and their indexes, right? अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, you can see here this is Nifty. Nifty is up by 98.7, somewhere 100 points up. Sensex up hai, so market is a little bullish, you can say, today. And this is Sensex is up. Sensex is nothing but यहाँ BSC लगा हुआ है, so it is a index of BSC, and Nifty is an index of NSE. Hope this very basic thing is clear, and see you in the next video. Till then, take care, goodbye, and do subscribe the channel. Thank you so much. Let me stop sharing with you. Thank you.